The commonest form of forgetfulness, I suppose, occurs in the matter of posting letters. Commonest ये सुपरलेटिव डिग्री है कॉमन की, जिसे कहते हैं कॉमन, कॉमनर, कॉमनेस्ट. फॉर्म माने शक्ल या सूरत. और फॉरगेटफुलनेस माने होता है भूलना, यानी भूलने की. नाउन है ये. आई सपोज़ माने होता है फ़र्ज़ मानना. अकर माने होता है वाक़ होना. इन द मैटर ऑफ यानी मामले में. पोस्टिंग माने पोस्ट करना, भेजना. लेटर्स ख़तों को. तो इसका माना हुआ द कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ फॉरगेटफुलनेस, भूलने की सबसे आम सूरत. आई सपोज़ मैं मानता हूँ. अकर्स कि वाक़ होता है. इन द मैटर ऑफ पोस्टिंग लेटर, ख़तों को पोस्ट करने के मामले में. सो कॉमन इज़ इट, ये क्या है? सो कॉमन इज़ इट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. सो कॉमन इज़ इट, ये इतना आम है. दैट आई एम ऑलवेज़ रिलेक्टेंट, कि मैं हमेशा गैर आमादा होता हूँ. रिलेक्टेंट माने गैर आमादा. मैं हमेशा गैर आमादा होता हूँ. टू ट्रस्ट, भरोसा करने के लिए. अ डिपार्टिंग विजिटर, एक ज़ियारत करने वाले के रवानगी के सिलसिले में. टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, एक अहम ख़त को पोस्ट करने के लिए. यानी कह रहा सो कॉमन इज़ इट, ये इतना आम है. दैट आई एम ऑलवेज़ रिलेक्टेंट, कि मैं हमेशा गैर आमादा होता हूँ. टू ट्रस्ट, की भरोसा करूँ. अ डिपार्टिंग विजिटर, एक जाने वाले शख्स पर. टू पोस्ट एन इम्पॉर्टेंट लेटर, एक अहम ख़त को पोस्ट करने के लिए. सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी. सो लिटिल यानी बहुत ही कम. सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, मैं उसके जहन पर, उसके याददाश्त पर बहुत कम ही भरोसा करता हूँ. दैट आई पुट हिम, कि मैं उसको. ऑन हिज ओथ, उसको मैं उसके कसम पे रखता हूँ, यानी मैं उसको कसम दिलाता हूँ. बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको ख़त देने से पहले. हैंडिंग माने देना. और पुट समवन ऑन हिज ओथ माने होता है कसम दिलाना. तो आप कहोगे सो लिटिल डू आई रिलाई ऑन हिज मेमोरी, उसके जहन पर मैं बहुत ही कम एतमाद करता हूँ. दैट आई पुट हिम ऑन हिज ओथ, यहाँ तक कि मैं उसको कसम खिलाता हूँ. बिफोर हैंडिंग द लेटर टू हिम, उसको ख़त देने से पहले. एज़ फॉर माई सेल्फ यानी जहाँ तक रही बात मेरे ताल्लुक़ से. एनी वन हु आस्क्स मी टू पोस्ट अ लेटर इज़ अ poor judge of character. आस्क माने होता है कहना. टू पोस्ट अ लेटर इज़ अ poor judge of character. poor judge of character माने होता है वो शख्स जो सही तौर पर फैसला ना ले सके. तो इसका माना होगा एनीवन हु आस्क्स मी, कोई भी जो मुझसे कहता है ख़त को पोस्ट करने के लिए, वो एक ना फैसला करने वाला आदमी होता है. तो वो एक ना अच्छे तरीके से फैसला करने वाला आदमी होता है. इवन इफ़ आई कैरी द लेटर इन माई हैंड, अगरचे मैं ख़त को अपने हाथ में लेकर के जाता हूँ. आई एम ऑलवेज पास द फर्स्ट फिलर बॉक्स बिफोर आई रिमेंबर दैट आई ought to have posted it. तो मैं हमेशा खंभे से
لیٹر باکس کے کھمبے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے اس خط کو پوسٹ کرنا ہے. ویری آف ہولڈنگ اٹ ان مائی ہینڈ. اس کو میرے ہاتھ میں پکڑ کر کے تھکنے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئی دین پٹ پھر میں اس کو رکھ دیتا ہوں فار سیفٹی حفاظت کے لیے into one of my pockets اپنے ایک جیب میں and forget all about it اور میں اس کے تعلق سے ساری چیزیں بھول جاتا ہوں. After that اس کے بعد it has an adventurous life till a long chain of circumstances lead to a number of embarrassing questions being asked. It has an unadventurous life. Unadventurous life معنی ہوتا ہے معنی پڑے رہنا. It has an unadventurous life. پھر یہ پڑا رہتا ہے یعنی لیٹر جیب میں پڑا رہتا ہے. Till a long chain of circumstances کئی صورتحال سے گزرنے تک leads to a number of embarrassing questions جو کہ لے جاتا ہے کئی سارے شرمندہ کرنے والے سوالوں تک جس کا جواب دینا ہوتا ہے. And I am compelled. compel معنی ہوتا ہے مجبور کرنا. I am compelled یہ پیسو وائس ہے اور میں مجبور کر دیا جاتا ہوں to produce کی لے کر کے آؤں the evidence of my guilt اپنے جرم کی دلیل کو from my pocket اپنے جیب سے. یعنی پھر میں مجبور کر دیا جاتا ہوں کہ کوئی دلیل پیش کروں اپنے غلطی کا اپنے جیب سے. This it might be thought یہ بھی سوچا جا سکتا ہے must be due to lack of interest کہ یہ دلچسپی کے کمی کے سبب ہوتا ہے in other people's letter دوسرے لوگوں کے خطوں میں. But that cannot be the explanation لیکن یہ تشریح نہیں ہو سکتی اس بات کی. explanation معنی ہوتا ہے تشریح. For I forget کیونکہ میں بھول جاتا ہوں to post some even of new letters اپنے کچھ نئے خطوں کو that I myself remember to write جسے میں بذات خود یاد رکھتا ہوں to write لکھنے کے لیے. I hope that you understood the translation. If you don't understand anything in translation, you can ask me on WhatsApp.